हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। आज का टॉपिक क्रिकेट। इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ हो रही है और अभी रिसेंटली इंडिया लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न एंड गोइंग डाउन 2-1 विद वन मैच टू स्पेयर विच इज़ हैपनिंग इन सिडनी ऑन फ्राइडे। तो जितने भी एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज सीरीज़ के, द सेम हाइप सेम इंटेंसिटी इज़ नाउ दैट वी कैन सी विद ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सीरीज एज वेल। तो जो मेलबर्न का लॉस है, इट हैज़न गॉन वेल विद स्पेशली द एक्स इंडियन प्लेयर्स। आई वाज अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड। वो इतने ज़्यादा क्रिटिकल हैं इस टाइम इंडियन टीम को लेके कि आई वाज अ लिटिल बिट टेकन अबैक कंपेयर टू इवन द इंडियन मीडिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो ऑब्वियसली इज़ हैविंग फन एंड दे आर हैप्पी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो जिस तरह का ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम इंडिया कर रही है एंड स्पेशली जो उन्होंने पर्थ में किया है, हमने बहुत जल्दी उस चीज़ को भुला दिया और आई थिंक हम ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक अपना पर्सपेक्टिव देना चाहिए, हैंस आई पिक्ड अप मेलबर्न। बाय नो मीन्स आई फील कि जो मेलबर्न में हुआ वो अच्छा हुआ या टीम इंडिया को बहुत प्राउड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस देयर विच आई विल टॉक अबाउट। तो मैंने इस वीडियो को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट पर्थ, कि पर्थ की हीरोइक्स वी मस्ट नॉट फॉरगेट। इनफैक्ट मैं उसके बारे में वीडियो करना चाहता था बट आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। Second, we'll talk about what happened in Melbourne. And third, I want to talk about the overall future of Indian cricket because it's very important कि हम big picture को ना भूलें, what we are seeing in this unit. And then obviously a little bit about what we can expect in the Sydney match based on my observations. So let's start with Perth, कि why Perth is so special and why Team India was perfect in Perth. तो पर्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे तो इफ़ यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ डोमिनेंट फोर्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप स्पोर्ट्स में देखें तो ऑस्ट्रेलिया इवन इन द ओलंपिक्स टॉप 5 में आते हैं। सो दे पैक अ पंच एंड दे आर ऑलवेज अप देयर competing with even big nations even though they are a small nation. तो क्रिकेट इज़ नो डिफरेंट। पहले वेस्ट इंडीज़ ने डोमिनेट किया फॉर अ डेकेड और सो, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सिंस दे टुक ओवर दे बीन डोमिनेटिंग द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो घर पे जैसे इंडिया की टीम टेस्ट अरीना में इज़ हार्ड टू बीट एंड समटाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट, सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का भी यही है, दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट। और जब बात आती है पर्थ की, देयर ट्रैक रिकॉर्ड इज़ इम्पेकेबल। आई थिंक पिछले 50 सालों में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 2 मैचेस वो हारे हैं और उसमें से एक इंडिया से हारे थे 2008 में। तो इंडिया ने पर्थ में 16 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से हराया है, बट विद अ बिग मार्जिन एंड विद अ वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री। सो व्हाई पर्थ इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी टीम टू कम एंड बीट, ऑल्दो टीम्स ने ज़्यादा किसी ने बीट किया नहीं है ऑस्ट्रेलिया को इन द लास्ट 50 ईयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कंडीशंस हैं पर्थ की, दे आर क्वाइट यूनिक। बाउंसी विकेट्स, बहुत हार्ड सरफेस है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट there's pace, there's bounce, and the ball swings both ways if you are a master of swing. And on top of that, just to add a bit more pressure, they also add a little bit of grass as well so that the ball goes even faster. तो जब भी टीम्स लैंड करती हैं किसी भी सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ के लिए, दे स्टार्ट विद पर्थ। तो जो इंटिमिडेशन होती है उनके साथ from day one, ball one, is of another level. Why? Because उन्होंने उस तरह की पिचेस खासकर सब कॉन्टिनेंट में हमने नहीं देखी historically. Now it's a different story. अब हमारा exposure because of IPL and the way we tour other countries all year round, things are different. लेकिन historically अगर आप देखें, और even now as well, even not just subcontinent, England, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, वो भी जब आते हैं उनके साथ भी यही होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह की हार्ड सरफेस नहीं इतनी देखी होती। या ऑब्वियसली वो पर्थ आते हैं लेकिन दे कम आफ्टर 2 years 4 years, तो वो एक क्लाइमेटाइजेशन, वो दे नॉट यूज टू इट। तो वहाँ पे एकदम आके इस तरह की पिच पे खेलना विच इज़ बाउंसी एंड फास्ट एंड हार्ड, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एज अ रिजल्ट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ टीम की जो बस वो विकेट बना के वो डोमिनेट कर लेते हैं।
They are a good team. They have been dominating the world of cricket in 50 overs as well as in test cricket for a long long time. तो उनके पास skill है, उनके पास art है, उनके पास talent है, both in batting as well as in bowling. तो वो उनको पूरी तरह से utilize करके conditions को they wrap up any game in 2 to 3 days or used to. तो when we put all this history together, and secondly अगर हम देखें, India was just coming to Australia after a whitewash in India, which hasn't happened for a long time, by New Zealand, which was not expected. So they were already on the back foot, low in confidence, batting was off color. तो आना पर्थ में और परफॉर्म करना, और फर्स्ट इनिंग्स में हमने देखा दे वर ऑल आउट फॉर 150, और मुझे लगा कि here we go again, it's gonna be the same outcome. लेकिन our bowlers stood up and they showed up. और जिस तरह से बुमराह, सिराज और बाकी बॉलर्स ने बॉलिंग की and they got them out at 104 was phenomenal. Full credit. फिर उसके बाद लेकिन batsmen realized their responsibilities in the second innings and they did extremely well. Kohli, Jaiswal and everyone chipped in, and the result was that we gave them a lead of about, I think, 534 if I'm not wrong, and we won the game by a margin of 295. Phenomenal effort. Fielding, bowling, batting, everything was top notch. तो हम इस चीज़ का, दिस इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग. दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री इन पर्थ. तो आप उसको इतनी जल्दी नहीं भुला सकते उसको. और हमने यस एडलेड में भी उसके बाद लूज़ किया. ब्रिस्बेन वाज आल्सो क्लोज कॉल, वो वेदर की वजह से आई थिंक इट वाज अ ड्रॉ. और मेलबर्न, आई विल कम टू दैट इन अ मिनट. लेकिन आई वुड स्टिल से कि जो यूनिट अब हम ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, जो इंडिया से आया है और जो इन्होंने पर्थ में किया है, लेट्स नॉट फॉरगेट इट सो क्विकली, सो फास्ट. और दे आर अ ब्रिलियंट यूनिट एंड दे मेड ऑस्ट्रेलियन थिंक. और लेट मी टेल यू दिस, ऑस्ट्रेलिया कांट एंड वॉन्ट गेट ओवर दिस फैक्ट in terms of what happened to them in Perth. And I'm surprised कि उन्होंने बहुत major changes नहीं की. Generally they don't wait this long. They will make wholesale changes if something like this happens. They made some minor changes. So a brilliant effort, and in Team India was absolutely, I would say, almost perfect in Perth. So a big credit goes to them, and we must not be, we must not forget what they achieved there, which was absolutely brilliant. Now let's talk about Melbourne. Of course, it was an unfortunate loss. और मैं ऐसे, and I was there on the 5th day. मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि जब आप लूज़ करते हैं तो उसके दो रीजंस होते हैं, दो पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ एंड दैट्स व्हाई यू लॉस्ट, या द अदर टीम वाज बेटर देन यू एंड हेंस दे वन. अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट, मुझे ये कोई एक्सपर्ट नहीं होना इसको बताते हुए कि टीम इंडिया लॉस्ट बिकॉज दे वर नॉट गुड इनफ. इट्स नॉट दैट ऑस्ट्रेलिया वॉज बेटर. एंड वाई, अगर आप फर्स्ट इनिंग्स भी देखें और द फर्स्ट 3 days देखें, वी वर इवन स्टीवन देन, इट वॉज मच ऑफ अ मचनेस. अगर वो अगेन हमें टॉप ऑर्डर का तो सबको पता है, एंड दैट्स व्हाट आर एक्स प्लेयर्स आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन अगर, and I hate to single out people, but unfortunately in this match or in this game, Rishabh Pant has been singled out. And I don't think कि मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपथी है ऋषभ के लिए, स्पेशली द वे ही प्लेड. इट्स वन थिंग टू से कि ये मेरी नेचुरल गेम है, मैंने इस तरह से आप मैचेस भी जिताए हैं, नो डाउट अबाउट दैट. बट एक सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, आपको देखना होता है कि गेम कहाँ है और आपको किस तरह से उसको आगे लेके चलना है, और आपका रोल क्या है. आई थिंक रोल को हटा के, सिचुएशनल अवेयरनेस को हटा के ये कहना कि आई एम जस्ट गोना गो फॉर एनी हिट इन एनी सिचुएशन, आई थिंक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. सो फर्स्ट इनिंग्स में भी आई थिंक जब टॉप ऑर्डर फेल होता है और ऋषभ पंत हु इज़ केपेबल ऑफ गेटिंग द टीम टू अ रिस्पेक्टेबल टोटल प्लेड अ वेरी बैड शॉट. इट्स एज इफ कि या तो मैं आउट होना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे होना नहीं चाहता, या मैं छक्के मारना चाहता हूँ. दैट वॉज जस्ट नॉट वेरी नाइस लुक. सो दैट वॉज द फर्स्ट इनिंग. अगर ऋषभ पंत वो शॉट ना खेलता, शायद हमारी फर्स्ट इनिंग का सिचुएशन कुछ और होता. देन कम्स द सेकेंड इनिंग, और द फोर्थ डे आई शुड से. फोर्थ डे पे जब जो टेल थी, द वे द टेल वैग्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया, और वो जो उन्होंने 80 to 90 रन ऐड किए, आई थिंक दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस.
वहाँ तक भी शायद टीम इंडिया, अगर वो उनको वहाँ पे रोक लेती और एडिशनल 80 to 90 रन और ना बनाने देती, तो शायद हम इस मैच को विन भी कर सकते थे। लेकिन वो जो हम पार्टनरशिप को नहीं ब्रेक कर पाए, कमिंस आया और उसके बाद नेथन लायन, द वे दे बैटेड, और उन्होंने जो 80-90 रन बनाए, आई थिंक दैट वाज द सेकंड टर्निंग पॉइंट. And then the third turning point, again, unfortunately, I have to single out Rishabh Pant, is the way he played. हमारा टॉप ऑर्डर फिफ्थ डे को फर्स्ट थ्री प्लेयर्स जा चुके थे, और बाय लंच टाइम इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, एंड मैं आई लिव इन मेलबर्न, मैं वहाँ पे था और मैं इसलिए गया था कि आई वाज होपिंग दैट देयर विल बी अ रिजल्ट इवन देन, और मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद इंडिया विल पुल अ मिरेकल. दैट वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग. बट जब लंच तक थ्री चले गए तो इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि इंडिया विल प्ले फॉर अ ड्रॉ. और जिस तरह से ऋषभ आया और उसने जैसवाल के साथ जिस तरह से बैटिंग की, आई कुड सी कि द मैसेज इज क्लियर, जस्ट गो फॉर अ ड्रॉ. एटलीस्ट दैट्स इन माई हम्बल व्यू आई फेल्ट. ऑल्दो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में कहा कि नहीं, वी वर ऑलवेज गोइंग फॉर अ विन, और वी वांटेड टू गो फॉर अ विन. Fine, but not after your top order is gone before lunch. I don't think you had the option to score over 6 runs per over. लेकिन पंत बहुत अच्छा खेल रहा था, नो इश्यूज. और मुझे लग रहा था दे बोथ वाज सीइंग द बॉल लाइक फुटबॉल. इस तरह से जिस तरह से वो डिफेंसिव, और जैसवाल बहुत स्लो खेल रहा था और बड़ा डिफेंसिव खेल रहा था. एंड इट वाज जस्ट लाइक कि ओके, वी आर गोना सी थ्रू सम सेशंस एंड देन विल हेड फॉर अ ड्रॉ. एंड आउट ऑफ द ब्लू, Rishabh Pant plays a shot to a part-time bowler. And the other thing is, जिस तरह से कमिंस ने अपने आप को हटाया, उसने स्टार्क को हटाया और पार्ट टाइम बॉलर्स को लेके आया, I said to myself, okay, now even Australia is playing for a draw because they know that they only have got 3 wickets. We are into the third session, close to tea. Not much is going to happen. India has got 7 wickets. So why stretch ourselves too much? Oh, let's save our legs, as they say. But Travis Head को वो लेके आया, and Rishabh Pant, don't know what happened, and goes for a shot that was, I don't know how to put it, and obviously he gets out. और जैसे ही वो out हुआ, a flurry of wickets. You all, if you have watched it, like after tea it was all over, and all the players who came after. Now मैं ये नहीं कहता कि ये ऋषभ की वजह से हुआ कि बाकी की विकेट्स गई, दैट्स जस्ट नॉट, दैट्स सिली. लेकिन अगर ऋषभ वहाँ खड़ा रहता और वो अगर एक एक्स फैक्टर है, जो उसका रोल है वहाँ पे, उस स्टेज पे विनिंग वाज नॉट एन ऑप्शन. और जिस तरह से उसने वो शॉट खेला, इट वाज जस्ट कम्प्लीटली इररिस्पॉन्सिबल. तो मैं तो ये कहूँगा कि जो ऋषभ, एक रिलायबल ऋषभ पंत होना चाहिए टीम के लिए, ऑन दैट डे विद दैट शॉट, आई थिंक ही प्रूव टू बी अ रेकलेस ऋषभ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. सो 3 टर्निंग पॉइंट्स थे. पहला, जो फर्स्ट इनिंग्स में ऋषभ आउट हुआ. सेकंड, जो हमारी टेल, ऑस्ट्रेलिया की जो टेल थी जिसने 80 to 90 रन ऐड किए, एंड देन अगेन ऋषभ फॉलोड बाय अ फ्लरी ऑफ विकेट्स. तो उनको अगर हम, इफ वी पुट देम ऑल टुगेदर, एंड लेट्स नॉट intentionally not mentioning it, शायद फोकस ऋषभ के ऊपर बहुत है, बट ऑफ कोर्स द टॉप ऑर्डर is also equally to be blamed. उनकी जो poor form है, it is continuing, and it's a bit of a concern, but I don't think I'm overly concerned. These guys are big guns, and they don't have a lot to prove to others. They know their game, they have the awareness, they know where they are falling short, and there's no shortage of people reminding them. So as I said कि जो ex players हैं, they are making sure that they remind them that what is expected from them and how they're letting them down and the team down. So they are acutely aware of it, but unfortunately I think they are also out of form and hence not performing. So all in all, in my view, yes, we lost in Melbourne, and Australia was not expecting that win, but still they won the game and they could not believe it. और पैट कमिंस ने बाद में बोला कि this is going to be, of course he's going to rub it in as well, कि this is going to be one of the best ones, because they were not hoping and they were not expecting कि टीम इंडिया इस तरह से फोल्ड हो जाएगी जिस तरह से वो डे 5 में हुए. सो अनफॉर्चुनेट, एंड फॉर श्योर इंडिया लॉस्ट द गेम इंस्टेड ऑफ Australia winning it. Again, not taking the credit away from Australia, but it was
I think India was at fault on that due to those reasons that I explained. So India was falling short. Now, the third part that I wanted to talk about is the future of India and what we can expect in Sydney. So let me talk about the future of India. मैं मेलबर्न में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सालों से रह रहा हूँ और मैंने क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो किया है और हमने स्टीव वॉक से लेके रिकी पॉन्टिंग का एरा देखा है और अपने कैप्टन्स का भी देखा है. लेट मी शो यू द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट इज़ एक्सट्रीमली ब्राइट एंड एक्सट्रीमली सॉलिड. तो जिस तरह की टीम आज हम देख रहे हैं और इवन इन द पास्ट धोनी एज वेल एंड गांगुली, we should be extremely proud of our team. And I'm not saying that we should not expect and demand better performance and them winning the series and all that, but just let's not forget that this is the team that has had a whitewash in India, and for them to come and perform like the way they have, I still feel quite proud and very happy overall in terms of how they are coming together, despite the fact कि जो हमारे बैट्समैन हैं, generally historically if you think or if you know, it's mainly our bowlers who struggle. So this way it's the other way around. Just imagine अगर हमारे बैट्समैन भी क्लिक कर रहे होते टॉप ऑर्डर, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती. तो and the reason they are not performing is not because they are not talented or they don't have the skills, it's just that they are out of form. तो I truly feel कि जो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, इट इज़ एक्सट्रीमली ब्राइट. नाउ व्हाई डू आई फील दैट वे? इट्स नॉट कि ये ओवरनाइट हम ये सब कुछ टैलेंट जो कहते हैं 3 T's, टैलेंट, टेम्परामेंट एंड व्हाट्स द अदर वन, टेक्निक. तो ये सब कुछ इंडिया हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट फॉर द लास्ट 2 decades. पिछले 15-20 साल से इंडिया इस चीज़ पे काम कर रहा है. सो एंड व्हाट आर वी वर्किंग ऑन? आर डोमेस्टिक क्रिकेट, नंबर 1, वेरी सॉलिड. आर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जिस तरह का पैसा अपने ग्राउंड्स बना रहे हैं और अपने जितनी भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को, वर्ल्ड क्लास. आर मैनेजमेंट, आर क्रिकेट बोर्ड, support staff and the management, selectors and all of that, everything is professional and top class. आपको किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं चाहिए to come into Indian cricket. It just doesn't work like that. You come on merit, you come through the domestic cricket, and yes, more importantly, I forgot to mention, a lot of people don't like it, IPL has a big role to play in this as well. तो IPL ने क्या दिया है हमें? Confidence दिया है हमारे players को. When they come, they are disciplined and they are not fearful. They are not afraid of anyone. आपने देखा पर्थ में किस तरह से कितनी वो फेमस हुई लाइन जब जायसवाल ने स्टार को बोला, it's coming too slow. I just cannot imagine any of our players, batsmen, saying to one of the world's fastest bowlers to say, mate, it's not coming too fast, or what he said was, it's coming too slow. This is new India, this is new Indian players. So we have a really bright future. And the other thing to also remember is succession plan. जब हमारे senior players retire होंगे तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा who is going to replace them. There's plenty of people waiting in the wings who are ready to come and conquer. So मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अभी इतना सक्सेशन प्लान में, if you think about it, हाँ वो they keep producing players out of blue. अभी जो सैम आया नया लड़का, मुझे उसका सरनेम भूल रहा है, कॉन्स्टस आई थिंक. अनदर ऐसा लग रहा है जैसे वो डेविड वार्नर को रिप्लेस करने के लिए आया. दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट एंड टैलेंट एंड बिग हिटर, बट टू अर्ली टू से. बट ऑस्ट्रेलियंस का भी इतना अच्छा सक्सेशन प्लान नहीं है जितना हम इंडियन टीम का है. सो व्हेन द सीनियर्स विल रिटायर, जिस तरह से हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा who's going to come. Obviously they can't be Kohli or Rohit overnight, but they have the temperament, they have the talent, they have the skills, but more importantly they have the confidence. उनकी body language, उनकी fitness level, they are ready for anything, anywhere. So hence I say the future of India is excellent. Now in terms of coming to Sydney test, the last remaining test on Friday, unfortunately I don't have very big hopes, but at the same time मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि टीम इंडिया इज़ गोना रोल ओवर. ऑस्ट्रेलियन टीम का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा क्योंकि जो उनको विन मेलबर्न में मिली है, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सो दे आर पम्प्ड, देयर टेल इज़ अप,
they are going to come at India even harder. And the whole crowd in Sydney will be a little bit different, although there'll be plenty of Indians in Sydney as well. But I think it's going to be a little bit of a tough time for Team India, purely because our top order is under pressure. तो वो उनको रहेगा थोड़ा सा to perform, and that pressure Australia will exploit really well. So until and unless our top order find their form quickly, we will have a context. अगर वो अपनी फॉर्म नहीं, अगर हमारे बैट्समैन नहीं चलते, unfortunately we shouldn't be expecting too much. But as I said, it doesn't matter what happens in Sydney, and even if we lose the series, let's not give up on our team. It's a brilliant team. और इसका जो फ्यूचर है, जो यंगस्टर्स हैं जो आ रहे हैं, जो आने की वेट कर रहे हैं, there's plenty of fuel in the tank and we have nothing to worry about, and we should be very proud and happy with the way these guys are performing, and we should back them up. So on that note, I'm going to wrap up this video. I hope you liked it. अगर आपको अच्छी लगी तो please do share it with your friends and family as well, and next time I'll see you with a new topic. Until then, be happy, be good, and take care.